Hi guys, so I'm back with the second part. In first part, we did till uh, this topic rise of regional aspirations. Okay, now we will move on to economic and administrative problems. Okay, economic and administrative problem. So let us start. The number of amirs and their ranks or mansabs had increased sharply over time. There was little hand left to be distributed among them as jagirs. Okay, so what is said over here is कि जो आमिर्स थे and their ranks और mansabs has increased. ठीक है, number of amirs increase हो गए थे. Okay, amirs were like agents for example. लेकिन लैंड जो थी वो बहुत कम बची थी because what they used to do कि जो भी लैंड थी they used to distribute and to this amirs or zamindars or mansabdars, and in return the zamindars or mansabdars or amirs has had the responsibility to collect the revenue and give it to the रूलर और अ किंग. बट लैंड ही नहीं जब बची थी तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. औरंगजेब tried to solve the problem of acute uh, jagirs or bejagiri bejagiri by showing enhanced income from the jagirs on record. अब औरंगजेब ने कैसे ट्राई किया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो कम लैंड बची थी उसकी. तो क्या किया ही ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय शोइंग एनहेंस इनकम फ्रॉम जागीर ऑन द रिकॉर्ड. ऑन रिकॉर्ड जो जागीर थी उससे ज़्यादा इनकम आ रही है ऐसा शो करके. बट दिस वॉज अ शॉर्ट साइटेड मेजर एज द आमिर ट्राइड टू रिकवर द रिकॉर्डेड इनकम फ्रॉम देयर जागीर बाय प्रेशराइजिंग द पेजेंट्री. ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था. दिस वाज नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. और इसका इसका फ्लिप साइड इफेक्ट क्या हुआ कि जो आमिर्स थे वो जो रिकॉर्डेड इनकम देख रहे थे ऑन डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर्स और ऑन रिकॉर्ड्स उतनी ही इनकम दे ट्राइड टू एक्सटॉर्ट और दे रिकवर फ्रॉम द पेजेंट्स और दे वर प्रेशराइजिंग द पेजेंट्स. ठीक है. सो बोथ आमिर एंड पेजेंट्री वेर एंटागोनिस्ट मतलब गुस्सा हो गए. देन ठीक है सब लोग दे गॉट एंग्री. ओके, then there were wars, the luxurious lifestyles of the emperors and amirs alike, the reduction in Khalisa land, all of which burden the state. ठीक है. और इसके अलावा इनकम कम थी बट द लाइफस्टाइल ऑफ किंग और जो आमिर्स की लाइफस्टाइल थी वो ऑलमोस्ट लाइक अ किंग. और उसके बाद में वॉर्स पे जो खर्चा होता था. उसके बाद में है कि रिडक्शन इन द खालिसा लैंड. ये सब के वजह से क्या हुआ स्टेट पर बर्डन आया. ठीक है. द रिजल्ट वाज दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट मच एक्सीडेड इट्स इनकम. ठीक है, इनकम कम हो रहा था और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था. ओके. There was moreover no significant scientific technological advance that could have improved a stagnant economy. ठीक है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं था जो ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकेगा. द वंस फ्लरिशिंग ट्रेड डिड नॉट एनरिच द एम्पायर्स कॉफर. इवन द इनरोड्स बाय यूरोपियन ट्रेडर ग्रू अलोंग द कोस्टल इंडिया. This economic and administrative problem only multiplied following the death of औरंगजेब. औरंगजेब के डेथ के बाद भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ते ही गए. The empire had become too vast to be efficiently administered by a centralized system when the rulers were weak and incompetent. ठीक है, तो एम्पायर इतना वास्ट था टू बी एफिशिएंटली एडमिनिस्टर्ड मतलब उसका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा था बाय अ सेंट्रलाइज सिस्टम. ठीक है, मतलब द एम्पायर वाज टू वास्ट एंड स्कैटर्ड हियर एंड देयर कि सेंट्रलाइज सिस्टम पॉसिबल नहीं था बिकॉज सेंट्रल अथॉरिटी के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इतना ध्यान रख सके या इतना एफिशिएंटली मैनेज कर सके. ठीक है.
Now, rise of regional states. Regional states का rise कैसे हुआ? The states that emerged as a result of decline of Mughal Empire can be classified into following three broad categories. ठीक है, मतलब जो स्टेट इमर्ज हुए मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में, उनको तीन कैटेगरीज में वी कैन डिवाइड. सो फर्स्ट कैटेगरी इज सक्सेसर स्टेट, then independent kingdom and new state. Okay, now let us read about the successor state. These were the Mughal provinces that turned into states after breaking away from empire. ठीक है, ये ऐसे मुगल प्रोविंसेस थे जो मुगल एम्पायर से अलग होके जिन्होंने अपना एम्पायर बनाया. मतलब इनिशियली दे वर अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर एंड लेटर दे ब्रोक ऑफ फ्रॉम मुगल एम्पायर एंड फॉर्म देयर ओन स्टेट. ठीक है, तो इन स्टेट्स को बोलते थे सक्सेसर स्टेट. Now, though they did not challenge the sovereignty of Mughal ruler, the establishment of virtually independent and hereditary authority by their governors showed the emergence of autonomous polity in these territories. Some examples are Awadh, Bengal and हैदराबाद. मतलब उन्होंने मुगल मुगल रूलर को चैलेंज नहीं किया. मतलब मुगल रूलर को चैलेंज करके अपना स्टेट अलग से नहीं बनाया कि भाई अभी मुगल किंगडम यहाँ पर है, वी आर चैलेंजिंग. और मतलब मुगल की कंपटीशन में आने की ये नहीं की, उन्होंने कोशिश नहीं की. बस एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाने की कोशिश की. ठीक है, सेकंड इज इंडिपेंडेंट किंगडम. These states came into existence primarily due to destabilization of Mughal control over the provinces. Example Mysore and Rajput. ठीक है, अब मुगल कुछ कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे विच वर इनिशियली अ पार्ट ऑफ मुगल प्रोविंस और मुगल किंगडम, बट जब मुगल प्रोविंसेस का डिस्टेबल हुए, मुगल कंट्रोल डिस्टेबल हुआ, तो दे took the opportunity to their best and established their independent kingdom. The third is the new state. These were the states set up by the rebels against the Mughal Empire. एग्जाम्पल्स बीइंग द मराठा, सिख एंड जाट स्टेट. ठीक है, अब इंडिपेंडेंट किंगडम्स और यहाँ पर सक्सेसर स्टेट में क्या देखे हमने, दोनों ने भी मुगल से अपने रिलेशंस अच्छे बना के रखे थे, बट दे वेर वांटिंग देयर ओन ऑटोनॉमी, सो दे मेड न्यू स्टेट्स. नाउ द न्यू स्टेट में क्या हुआ था, दे वर रेबलिंग अगेंस्ट द मुगल एम्पायर. है ना, मतलब ये मुगल के अपोजिशन में उन्होंने बनाया था, अपोज करने के लिए. दे वांटेड द मुगल टू गो. दे वर नॉट, दे डिडंट बिलीव इन कीपिंग गुड रिलेशंस विद द मुगल. ठीक है, तो ऐसे कौन थे, मराठा, सिख एंड जाट. ठीक है, नाउ सर्वे ऑफ रीजनल किंगडम्स. अभी ये जो रीजनल किंगडम्स बने थे उनके बारे में, लाइक मैसूर, मराठा, सिख, जाट, अवध, बंगाल, हैदराबाद, इसमें इसके बारे में विल सी. नाउ हैदराबाद, द फाउंडर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड. नाउ हैदराबाद, the founder of Hyderabad was Asaf Jaha. House of Hyderabad was Kilkich Khan, popularly known as Nizam ul Mulk. ठीक है, who was the founder? Nizam ul Mulk. Asaf Jah House, the founder of Asaf Jah House of Hyderabad was Kilkich Khan, popularly known as Nizam ul Mulk. It was Zulfikar Khan who had first conceived the idea of independent state in Deccan. But with his death in 1713, the dream remained unfulfilled. Kilich Khan, disgusted with the Mughal emperor who had appointed Mubriz Khan as full-fledged viceroy of Deccan, decided to fight Mubriz Khan. He defeated and later killed Mubriz Khan in the Battle of Shakarkheda in 1724. He now assumed the control of Deccan in 1725. He became the viceroy and conferred him the title of Asaf Jah. ठीक है, now all the detail about how Hyderabad was founded is given over here. हमको सिर्फ क्या याद रखना है, it was founded by Nizamul Mulk. ठीक है,
पहले जुल्फ़िकार खान का एक ड्रीम था कि ही वांटेड अ इंडिपेंडेंट स्टेट इन डेक्कन, बट ही डाइड, है ना? ही डाइड, उसके बाद में वो अनफुलफिल्ड रह गया वो ड्रीम। उसके बाद में किल्किच खान disgusted with Mughal emperor who appointed Mubriz Khan as a full, मतलब ये उनके इंटरनल पॉलिटिक्स का मैटर बोला है कि क्यों ही उन्होंने क्यों हैदराबाद फॉर्म किया, ठीक है? तो उनके बीच में फिर ये बैटल ऑफ शक्करखेड़ा, जस्ट एक याद रखना कि ही डिफीटेड एंड किल्ड मुबरिज खान और अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ टेक्कन, ठीक है? जस्ट दिस मच इज इनफ। नाउ नेक्स्ट इज अवध। द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध was सादत खान, पॉपुलरली नोन एज बुरहानुन मुल्क, ठीक है? हु was द फाउंडर? बुरहानुन मुल्क, ठीक है? सॉरी, बुरहान उन मुल्क, उल मुल्क. Okay, he joined in the conspiracy against Sayyid brother, which resulted in his being given an increased mansab. Later, driven out of court, he was prompted to found a new independent state. Sadat Khan committed suicide due to pressure from Nadir Shah, who was demanding a huge booty from him. He was succeeded by Safdar Jung and Nawab as Nawab of Awadh. Nothing important here. It was founded by Burhanun Mulk. Now, Bengal. Murshid Quli Khan was the founder of independent state of Bengal. He was a capable ruler and made Bengal a prosperous state. Okay? He did a positive thing for Bengal. He was succeeded in 1727 by his son Shujauddin. His successor Sarfaraz Khan was killed in 1740 by Alivardi Khan, the deputy governor of Bihar at Gheria, who assumed the power and made himself independent of Mughal emperor by giving a yearly tribute. ठीक है? Now the Rajputs. The Rajput tried to re-establish their independence in 18th century. This forced the Mughal ruler Bahadur Shah I to march against Ajit Singh, who had formed an alliance with Jai Singh II and Durgadas Rathore. But the alliance was broken and the situation was saved for the Mughals. At one time, the Rajput controlled the entire territory extending from South Delhi up to Western coast. अब यहाँ पे important कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि Ajit Singh and Jai Singh too were related to the Rajputs, and alliance not important. Now Mysore. Another important state to make its appearance in the 18th century was Mysore. This territory was located at the junction of Eastern and Western Ghat, was ruled by the Wadayars. Various power interested in this territory turned the area into a constant battlefield. In the end, the Mysore state was brought under the rule of Hyder Ali. Okay, so in the end, the Mysore state was brought under the rule of Hyder Ali. Okay, we'll note this. Who ruled the state but not without trouble. He was involved in constant warfare with the British, and so was his son Tipu Sultan. Tipu Sultan was his son. Okay, now Kerala. So Mysore was ruled by Wadiyar's dynasty. Eastern and Western Ghat का territory था. Then Mysore state was brought under the rule of Hyder Ali and later was ruled by Tipu Sultan. Okay, this much is okay. Now Martand Verma established the independent state of Kerala with Travancore as his capital. Okay, Travancore was his capital. He extended the boundaries of state from Kanyakumari to Cochin. He made efforts to organize his army along the Western model and adopted various measures to develop his state. Okay, the Jats, the agriculturist Jat settler living around Delhi, Mathura, and Agra, re- revolted against the oppressive policies of Aurangzeb. After some initial setback, Churaman and Badan Singh succeeded in setting up the Jat state of Bharatpur. Okay, was set up by whom? Churaman and Badan Singh succeeded in setting a Jat state of Bharatpur. But it was under Surajmal that Jat power reached its zenith. Zenith matlab top.
He not only provided an efficient system of administration but greatly extended the territory of the state. His state included territories from Ganga in the east to Chambal in the south and included the subas of Agra, Mathura, Meerut and Aligarh. However, the जाट just remember कि कौन से areas जाट के अंदर आते थे, ठीक है? You don't need to learn it, but just have an idea. However, Jat state suffered a decline after death of Surajmal in 1763. Thereafter, they split into small areas controlled by petty zamindars who mainly lived by plunder. Okay, now 6. Guru Gobind Singh transformed the Sikh into a militant sect in defense of their religion and liberties. Banda Bahadur, who later assumed the leadership of Sikhs in 1708, was defeated and killed. In the wake of invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, Sikh once again asserted their authority. ठीक है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जब रिपीटेड इन्वेजन्स करने लगे तो वो टाइम पे क्या किया, सिख वंस अगेन असर्टेड देयर, सिख अपनी अथॉरिटी में आ गए. ओके, at this stage, they only organized themselves into 12 missiles or confederacies which exercised control over different part of kingdom. ठीक है, जब उनको पता चला कि ये अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह करके कंटिन्यूस अटैक कर रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने क्या किया, खुद को 12 मिसल्स और कॉन्फेडरेसीज और सिंपल लैंग्वेज ग्रुप्स में खुद को बांट लिया, ठीक है, और अलग अलग पार्ट में अपना कंट्रोल एक्सरसाइज किया ग्रुप में बैठ के खुद को, ठीक है. द क्रेडिट ऑफ एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ पंजाब गोज टू रंजीत सिंह. ही वॉज द सन ऑफ महान सिंह, द लीडर ऑफ शुक्राचार्य मिसल. ओके, ठीक है, वो कौन से शुक्राचार्य मिसल को बिलोंग करते थे. रंजीत सिंह brought under control the area extending from Satluj to Jhelum. He conquered Lahore in 1799 and Amritsar in 1802. The Treaty of Amritsar with British By the Treaty of Amritsar with British, Ranjit Singh acknowledged the British right over cis Satluj territories. ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ कि रंजीत सिंह ने ब्रिटिश को एक टेरिटरी दे दी जिसका नाम था सिस सतलज टेरिटरी. Ranjit Singh proved to be an efficient administrator. He greatly modernized his army with the help of Europeans. ठीक है, but toward the close of his reign, the English forced him to sign the Tri-Party Treaty in 1838 with Shah Shuja and company, where he agreed to provide passage to British troops through Punjab with a view to placing Shah Shuja on the throne of Kabul. ठीक है, उनका पूरा जो ये था, पूरा टाइम था जितना टाइम उन्होंने रूल किए, उसके टूवर्ड्स एंड जब 1833 आता है तो ब्रिटिश उनको ज़बरदस्ती क्या कराते हैं, ट्राई पार्टी ट्रीटी साइन करवाते हैं. और ट्राई पार्टी ट्रीटी में क्या था कि शाह शुजा और इंग्लिश कंपनी मिलके उनको ये करवाते हैं. और इस ट्रीटी में था कि उनको अग्री करना है टू प्रोवाइड पैसेज, ब्रिटिश ट्रूप को पैसेज प्रोवाइड करने को थ्रू पंजाब. ठीक है, एज ही वॉज द रूलर ऑफ पंजाब, तो पंजाब के थ्रू पैसेज प्रोवाइड करने की परमिशन देना है विद द व्यू ऑफ प्लेसिंग शाह शुजा ऑन थ्रोन ऑफ काबुल. ठीक है, तो उनको कहाँ कहाँ पे पहुंचना था, काबुल में, क्योंकि शाह शुजा को उनको एम्परर बनाना था, to place him on the throne. Okay, his successor could not keep the state intact, and soon enough British took control over it. Okay, now next is Maratha. Perhaps the most formidable province to emerge was that of Maratha. Under the capable leadership of Peshwas, the Maratha uprooted the Mughal authority from Malwa and Gujarat and established their rule. ठीक है, क्या बोला है कि अंडर द कैपेबल लीडरशिप ऑफ पेशवा, किसके लीडरशिप के अंडर चल रहा था मराठा उस टाइम, पेशवा के. मराठा अपरूटेड द मुगल अथॉरिटी फ्रॉम मालवा. ठीक है, मालवा से और गुजरात से उन्होंने मुगल को अप्रूट कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था इन दो जगह से. एट वन टाइम दे क्लेम्ड
the right to be chief inheritors of Mughal dominion, but their authority was challenged by Ahmad Shah Abdali in the third battle of पानीपत. ठीक है, एक ऐसा भी टाइम आया था कि जब वो क्लेम कर रहे थे कि जो मुगल डोमिनियन के चीफ इनहेरिटर्स है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है मुगल डोमिनियन, वो हम ही है, लेकिन they were challenged by Ahmad Shah Abdali. The Mughal quickly recovered from the defeat and offered most formidable challenge to East India Company in the struggle of political supremacy in India. ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से मराठा रिकवर हो गए और उसके बाद उन्होंने एक टफ फाइट दिया, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को भी. ठीक है, नाउ रोहिला खंड एंड फारुखबाद. The states of Rohilkhand and the kingdom of Bangash Pathans were all a fallout of Afghan migration to India. Large-scale immigration of Afghans into India took place in mid-18th century because of the political and economic turmoil in Afghanistan. अली मोहम्मद खान टुक एडवांटेज. ठीक है, पॉलिटिकल टर्माइल चल रहा था अफगानिस्तान में, तो बहुत सारे वहाँ के लोग इंडिया माइग्रेट हो गए. ठीक है, फिर क्या बोला है कि अली मोहम्मद खान टुक एडवांटेज ऑफ कोलैप्स ऑफ अथॉरिटी इन नॉर्थ इंडिया फॉलोइंग नादिर शाह's इन्वेजन टू सेट अप अ पेटी किंगडम ऑफ रोहिलाखंड. ठीक है, अली मोहम्मद खान ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लिया और नादिर शाह के इन्वेजन चल ही रहे थे, तो उसने रोहिलाखंड में अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया. दिस वॉज द एरिया ऑफ हिमालयन फुट हिल्स बिटवीन कुमाऊं इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ. ठीक है, द रोहिलाज एज इनहेबिटेंट्स ऑफ रोहिलाखंड वेयर नोन suffered heavily at the hands of other powers in the areas. The Jats and Awadh rulers and later Marathas and the British, इन सब के वजह से वो बहुत सफ़र किए. Muhammad Khan Bangash and Afghan set up an independent kingdom in the east of Delhi area around Farrukhabad during the reign of Farrukh Siyar and Muhammad Shah. फारुखाबाद का कुछ भी नहीं दिया है, बस कौन से एरिया में वो सेटअप हुआ था किंगडम, वही दिया है. ठीक है, नाउ नेचर एंड लिमिटेशंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. नाउ अभी रीजनल स्टेट्स तो सबने अपने अपने बना दिए थे, बट हाउ वाज इट्स नेचर एंड व्हाट वेर द लिमिटेशंस, विल सी. ठीक है, the independent political system that emerged in provinces continued to maintain ties with Mughal imperial authority and acknowledge the emperor's importance as an umbrella. ठीक है, नाउ जैसा हमने बोला था कि बहुत स्टार्टिंग में हमने देखे थे 3 कैटेगरीज है, उसमें के 2 कैटेगरीज तो जो थे उन्होंने मुगल से अच्छे रिलेशंस बना के रखे थे, बस एक तीसरी थी मराठास, जाट्स और सिख्स जो अपोज कर रहे थे, तो वही बोला है कि continued to maintain ties with Mughal. ठीक है, even rebel chieftains of Maratha Sikhs recognized the Mughal emperor as supreme authority. ठीक है, भले ही मराठा और सिख अपोज कर रहे थे, but they recognized Mughal emperor as supreme authority. The polity that emerged in this state was regional in character and functional with the collaborative support of different local groups like zamindar, merchants, local noble and chieftains. ठीक है, और ये जो सब रीजनल किंगडम्स थे या रीजनल ग्रुप्स थे, उनकी जो पॉलिटी थी वो इसके सपोर्ट से चल रही थी, लोकल लोगों के, जैसे जमींदार, मर्चेंट्स एंड लोकल नोबल्स एंड chieftains. The provincial rule had to take care of these various local interests in order to maintain themselves. Of course, there were exceptions. For instance, in Mysore, rulers did not recognize the rule local chieftains. ठीक है, क्या बोला है, द प्रोविंशियल रूलर्स हैड टू टेक केयर ऑफ दिस वेरियस लोकल इंटरेस्ट इन द ऑर्डर टू मेंटेन देमसेल्फ. ठीक है, लोकल इंटरेस्ट को ऑब्वियसली उनको ध्यान रखना था, क्योंकि लोकल जो लोग थे उनके ही सपोर्ट से उनका जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन कर रहा था या चल रहा था. ठीक है, the regional states had certain limitations. The provincial rulers failed to develop a system based on sound financial, administrative and military organization. ठीक है, तो उन्होंने किस किस चीज़ पर नहीं दिया, फिनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया. दे फेल टू डेवलप द सिस्टम. ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स. वेर एज कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेजर पिलर्स है वो यही
चीजें होनी चाहिए, बट उन्होंने नहीं ध्यान दिया. दो सम ऑफ देम ट्राइड टू मॉडर्नाइज, नोटेबली मैसूर. ऑन द होल दे वेर बैकवर्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, दे ट्राइड टू मॉडर्नाइज बट दे वेर बैकवर्ड इन science and technology as compared to the Britishers. Okay. Another drawback was constant warfares. Constant warfares. These state had with the neighborhood regional powers. ठीक है. दूसरा एक क्या था कि जो neighborhood powers, regional powers है, उनके साथ में constant इनके wars चल रहे थे. इन विच नन कुड अल्टीमेटली डोमिनेट. ठीक है, कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन इनके वॉर्स कंटिन्यूसली चल रहे थे. इनफैक्ट दीज स्टेट्स वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू चैलेंज मुगल पावर, बट नन वॉज एबल टू रिप्लेस इट विद द स्टेबल पॉलिटी एंड एट ऑल इंडिया लेवल. ठीक है, तो क्या मतलब इनका बोलने का मतलब क्या है कि जो रीजनल पावर्स थे उसमें से मुगल डिक्लाइन होने लगा था, तो बहुत सारे ऐसे रीजनल पावर्स थे जो मुगल को चैलेंज कर सकते थे वो टाइम पे, और अगर मुगल्स को चैलेंज कर देते तो वो लोग अथॉरिटी में आ जाते. बट किसी के पास ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, और वो फार साइटेडनेस नहीं थी, बोलते ना दूरदृष्टि नहीं थी कि इतना फ्यूचर में वो लोग झांक के देखेंगे और अपना रूल इस्टेब्लिश करेंगे. ठीक है. The Jagirdari crisis intensified as income from agriculture declined and the number of contenders for a share of surplus multiplied. ठीक है, जागीरदारी क्राइसिस क्या हुई, इंटेंसिफाई हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो इनकम आ रहा था वो डिक्लाइन हो गया. ठीक है, and number of contenders for a share of surplus multiplied. और नंबर ऑफ कंटेंडर्स जो है किसी चीज के शेयर के लिए वो मल्टीप्लाइड, जैसे हमने देखे थे कि लैंड ही नहीं बची थी मनसबदार्स और सूबेदार्स और सूबाज को देने के लिए. ठीक है. दो द ट्रेड इंटर्न दो ट्रेड इंटरनल एंड फॉरेन कंटिन्यूड विदाउट डिस्ट्रप्शन एंड इवन प्रॉस्पर्ड, द रेस्ट ऑफ इकोनॉमी स्टैग्नेटेड. ठीक है, ट्रेड हो रहा था, प्रॉस्पर भी हो रहा था, लेकिन इकोनॉमी क्या थी, स्टैग्नेंट हो गई थी, क्योंकि इकोनॉमी कैन नॉट बी डिपेंडेड ओनली ऑन ट्रेड. ठीक है. नाउ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी वो टाइम की. ओके, वी आर डन विथ दिस. ओके, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या थी. ठीक है. नाउ 18th सेंचुरी इंडिया फेल्ड टू मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमको क्या मिल गया कि इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव नहीं था वो टाइम का 18th सेंचुरी का इंडिया, और इकोनॉमिकली तो नहीं था, सोशली और कल्चरली भी प्रोग्रेसिव नहीं था, प्रोग्रेस नहीं हो रहा था एट एडिक्वेट पेस. ठीक है, एक प्रोग्रेस होने का जो एक स्पीड होता है, लेवल होता है, उस स्पीड से नहीं हो रहा था प्रोग्रेस. India became a land of contrast because extreme poverty and extreme luxury existed side by side. ठीक है, contrasting situation चल रहा था. There was no balance, या तो लोग extremely गरीब थे, पुअर थे, या extremely rich थे. ठीक है. The common populace remained impoverished, backward and oppressed. ठीक है, and lived at the bare subsistence level. The rich and powerful enjoyed a life of luxury and lavishness. ठीक है, extreme conditions जो हमने देखे. But it is worth noting that the life of Indian masses was by and large better in 18th century than after 100 years of British rule. ठीक है, भले ही ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन वो इसमें बोला है कि ब्रिटिश रूल से तो बहुत बेटर लाइफ थी. नाउ एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन था, मतलब एग्रीकल्चर में क्या कंडीशंस थे, विल सी. दो एग्रीकल्चर वाज टेक्निकली बैकवर्ड, it was worked by the hard labor of peasants, but this hard working class seldom got the fruits of their labor. मतलब सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग थे, लेकिन उनको कभी उसका रिटर्न्स नहीं मिला. इवन दो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सपोर्टेड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, अ पेजेंट्स ओन रिवॉर्ड वाज मिजरेबली इनएडिक्वेट. ठीक है, उनके लिए कोई पैसा बचता ही नहीं था. दे वर फोर्स्ड टू पे एक्सटॉर्बेंट अमाउंट टू द स्टेट, द जमींदार एंड जागीरदार एंड द रेवेन्यू फार्मर्स, बट दिस वर्सनड अंडर ब्रिटिश रूल. ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंदर ये और भी
वर्स होने लगी सिचुएशन. व्हाट वाज नाउ विल सी ट्रेड और इंडस्ट्री का क्या था. On the account of being self-sufficient in handicrafts, India was self-sufficient in handicraft and agricultural product. India did not import foreign goods on large scale क्योंकि हम लोग self-sufficient थे. On the other hand, its industrial and agricultural product were good demand in foreign markets. ठीक है. Hence, exports were more than imports. This is what we are trying to achieve in today's days and age. ये already ये था, ये हमारे यहाँ पर इंडिया में थी ये सिचुएशन की exports were more than imports. Trade was balanced by import of silver and gold. इंडिया गोल्ड और सिल्वर का import होता था. इंडिया was known as sink of precious metals. ठीक है. क्या क्या इम्पोर्ट करते थे फ्रॉम पर्शियन गल्फ से पर्ल्स रॉ सिल्क वूल डेट्स ड्राइड फूड रोज वाटर अरेबिया से कॉफ़ी गोल्ड ड्रग हनी चाइना से टी शुगर पोर्सिलिन सिल्क तिब्बत से गोल्ड मस्क वुलन क्लोथ्स अफ्रीका से आइवरी ड्रग्स यूरोप से वुलन क्लॉथ कॉपर आयरन लेड पेपर और एक्सपोर्ट क्या था कॉटन टेक्सटाइल रॉ सिल्क सिल्क फैब्रिक हार्डवेयर इंडिगो सॉल्ट पेत्रे पाट्रे ओपियम राइस व्हीट शुगर पेपर एंड अदर स्पाइसेस. ठीक है. इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल क्या थे डेक्का मुर्शिदाबाद पटना सूरत अहमदाबाद बरोच चंदेरी बुरहानपुर जौनपुर वाराणसी लखनऊ आगरा मुल्तान लाहौर. ठीक है. नाउ मसूलीपट्टनम औरंगाबाद चायकोले विशाखापट्टनम बैंगलोर कोयम्बतूर मदुराई कश्मीर was the center of woolen manufacturers. Now shipbuilding industry का क्या status था. Maharashtra and Andhra region and Bengal were the leaders in shipbuilding. Indian shipbuilding also flourished on Kerala coast and Calicut and Quilon. The Zamorin of Calicut used the Muslim Kunjal Maraikars, who were well known for their seafaring abilities for his navy. Shivaji Bhosle's navy. This is Shivaji Maharaj, okay? Chhatrapati Shivaji Maharaj. Shivaji Bhosle's navy put up a good defense on the west coast against the Portuguese. According to Bipin Chandra, European companies bought many Indian-made ships for their use. Okay. Now, status of education. What was the status of education? The education imparted in 18th century was still traditional. Okay, was still traditional, which could not match the rapid developments in the West. The knowledge was confined to literature, law, religion, philosophy, and logic. ठीक है. फिजिकल एंड नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी की कोई स्टडीज़ नहीं थी हमारे यहाँ उस टाइम पर. लिटरेचर लॉ रिलीजन फिलोसफी और लॉजिक का की स्टडी होती थी. इनफैक्ट ड्यू टू ओवर रिलायंस प्लेस्ड ऑन एशियट लर्निंग एनी ओरिजिनल थॉट गॉट डिस्करेज. ठीक है. एंशियंट लर्निंग पे हमारा इतना फोकस था कि कोई भी न्यू थॉट आता था तो उसको डिस्करेज किया जाता था. Elementary education among the Hindus and Muslims was quite widespread. The Hindu and Muslim elementary school were called pathshalas. ठीक है. Elementary schools were called pathshalas and maktabs. ठीक है. हिंदू को पाठशाला बोलते थे और मुस्लिम की जो एलिमेंट्री स्कूल थी उसको मकताब्स. द एजुकेशन वाज कन्फाइंड टू रीडिंग एंड राइटिंग एंड अरिथमेटिक. Children from the lower caste sometimes attended school, but female presence was lower. Female presence was lower. ठीक है. Chatuspatis or tolls are as they were called in Bihar and Bengal were the center of higher education. Some of the famous center for Sanskrit education were in Kashi, Varanasi, तिरहुत मिथिला नाडिया उत्कला और ठीक है. यहाँ पर क्या थे सेंटर ऑफ संस्कृत एजुकेशन. मदरसाज वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग फॉर पर्शियन एंड अरेबिक. ठीक है.
पर्शियन बीइंग द कोर्ट लैंग्वेज एंड लर्न बाय द मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज। ठीक है, कोर्ट लैंग्वेज थी, मतलब जो राजा के किंगडम में जो सब डिसीजंस होते हैं उसकी लैंग्वेज थी। Azimabad, Patna was the famous center for Persian education. Okay, people interested in study of Quran and Muslim theology acquired the proficiency in Arabic. ठीक है, now social setups. So क्या social setup क्या था उस टाइम का? Many caste and many sects. ठीक है, बहुत सारी caste थी वो टाइम पे प्रेजेंट थी, और many sects. ठीक है, the society of 18th century was characterized by traditional outlook and stagnation. ठीक है, ट्रेडिशनल आउटलुक था और स्टैग्नेशन था। ठीक है, though there existed a certain degree of broad culture unity, people were divided by caste, religion, tribe and language. See, I am highlighting this is because यूपीएससी का फोकस यही रहता है कि वो टाइम पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या रहती है करके। ठीक है, द फैमिली सिस्टम was primarily patriarchal and caste was the central feature of social life of Hindus. Apart from four varnas, मतलब four varna system existed. Hindu were divided into many subcaste which permanently fixed their place in social scale. So divided into subcaste. ठीक है, though the choice of profession was mainly determined by caste consideration, exceptions occurred on large scale, making caste status quite fluid in some part of the country. Caste councils, panchayat enforced caste norms and regulations. ठीक है, so what is said here, caste council and panchayat enforced caste के जो norms थे और रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो कौन एनफोर्स करता था? कास्ट काउंसिल्स एंड पंचायत। ठीक है, even though Islam enjoined social equality on the Muslim, they too were divided by consideration of caste, race, tribe, and status. Religious consideration not only kept the Sunni and Shia nobles apart but also the Irani, Afghani, Turani, Hindustani, Muslim nobles and officials apart from the other. ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों भी कम्युनिटी में डिवीजन था, कास्ट में कास्ट डिवीजन था। ठीक है, द शरीफ मुस्लिम कंसिस्टिंग ऑफ नोबल स्कॉलर priest and army affair often looked down upon the Aliyaf Muslims or the lower class Muslims in the manner similar to the way of higher caste. Hindus treated the lower caste Hindus. Hindus treated the lower caste Hindus. ठीक है, जैसे हिंदू लोअर कास्ट हिंदू को ट्रीट करते थे वैसे ही मुस्लिम करते थे, दैट इज व्हाट इज सेड। ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन्स occurred and caste proved to be major decisive force and element of disintegration in the 18th century. ठीक है, caste was the element of divisive force and disintegration in 18th century. Now position of women. What was the position of women? Patriarchal family थी, women possessed little individuality of their own. ठीक है, though there were few exceptions. While upper class women remained at home, lower class women worked in field and outside their home, supplementing the family income. Certain outdated and exploitative social customs and traditions such as पर्दा सती, child marriage, polygamy did exist. ठीक है, ये सब चीज़ें exist करती थी, which hindered the progress of women. The plight of Hindu widow was usually miserable. The evil of dowry भी existent था, was especially widespread in Bengal and Rajputana. Sensitive Indian were often touched by harsh life of the widows. Raja Savai Jai Singh of Amber and Maratha General Purushottam Bhau tried to promote widow remarriage but failed. ठीक है, ये दो नाम important है because उस time में they tried to promote widow remarriage. Now the menace of slavery. Slavery का क्या situation था? European travels and administrator who came in the 17th century reported the widespread prevalence of slaves in India. ठीक है,
तो वो बोलते हैं कि वो टाइम पर था स्लेव ट्रेड. इट इज बिलीव्ड slavery, sorry. It is believed that some people were compelled to sell their offsprings due to economic distress, famines, natural calamities and extreme poverty. ठीक है, इन रीजन की वजह से वो अपने ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चों को बेच देते थे. जनरली हायर क्लास ऑफ राजपूत, खत्रीज, कायस्थ केप वुमेन स्लेव फॉर डोमेस्टिक वर्क. ठीक है, वुमेन स्लेव को रखते थे for domestic work. However, the status of slave in India was better than in Europe. Slaves were usually treated as hereditary servants rather than menials. ठीक है, जैसे यूरोप में था कि they were treated as menials, वैसे इंडिया में they were treated as servants. ठीक है, marriage took place among the slaves and and the offspring coming out of such wedlock was considered as free citizens. ऐसा इंडिया में नहीं था कि भाई अगर उनका बच्चा होगा तो वो भी स्लेव होगा, ऐसा नहीं था. दैट चाइल्ड वाज कंसिडर्ड एज फ्री सिटीजन. द एडवेंट ऑफ यूरोपियन हाइटेंड द स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड इन इंडिया. ठीक है, यूरोपियंस आने की वजह से स्लेवरी और स्लेव ट्रेड दोनों बढ़ गया. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज परचेज स्लेव्स फ्रॉम द मार्केट ऑफ बंगाल, आसाम, बिहार एंड टुक देम टू यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट. Abolition slaves were sold at Surat, Madras, and Kolkata. Now, development in art and architecture. Okay, but this is the last topic. Then we are done with the second chapter. Art, architecture और culture में क्या development हुआ? The decline of imperial Mughal forced talented people to seek the patronage of newly established state court like Hyderabad, Lucknow, Jaipur, Murshidabad, Patna, Kashmir, etc. ठीक है, imperial मुगल का जब डिक्लाइन हुआ तो उनके उनके जो किंगडम में जो टैलेंटेड लोग थे वो देवर फोर्स्ड कि हम अब मतलब देवर केप्ट ऑन सैलरी ना. मतलब मुगल एम्पायर में जो भी पेंटर्स होते थे या सिंगर्स होते थे या स्कल्पचरर्स होते थे वो सैलरी पर उनको रखते थे बिकॉज किंग को शौक होता था इन सब चीज़ों को करवाने का. ठीक है, तो जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उनको कौन देगा एम्प्लॉयमेंट, इसलिए they were forced to move to जो न्यूली established स्टेट कोर्ट थे उनके पास जाने के लिए वो लोग मजबूर हो गए. At Lucknow, Asafudollah built the बड़ा इमामबाड़ा in 1784. ठीक है, लखनऊ में असफुद्दौला built बड़ा इमामबाड़ा. ठीक है, the first half of 18th century, Savai Jai Singh built the Pink City of Jaipur and 5 astronomical observatories in Delhi, Jaipur, Banaras, Mathura and उज्जैन. ठीक है, तो सवाई जय सिंह का ये कंट्रीब्यूशन है. He also prepared a set of timetable called जिज मोहम्मद शाही. ठीक है, to help people to study the astronomy in the south. In Kerala, Padmanabhapuram Palace, famous for its architecture and mural painting, was constructed. ठीक है, new school of painting were born and achieved distinctions. The paintings of Rajputana and Kangra school became prominent and revealed the new vitality and taste. The distinct feature of literary life of 18th century was the growth of Urdu language and poetry. It was the period of Urdu poet like मीर, सौदा, नाजिर, मिर्ज़ा गालिब. ठीक है, ये सब poets वो टाइम पर famous थे. In South, Malayalam literature flourished under the patronage of Travancore rulers. ठीक है, Kanchan Nambiar was the noted Malayalam poet. The Tamil language enriched by Sitar poetry. ठीक है, this is important from art and culture point of view. ठीक है, Tayum Manavar, one of the best exponent of Sitar poetry, protested against the abuse of temple rule and caste system. Heer Ranjha, romantic epic in Punjabi literature, was composed by Waris Shah. In Sindhi literature, Shah Abdul Latif composed Rasilo, a collection of poems. These are just some example of literary work and regional languages.
So here we have completed the fourth chapter, guys. India on the eve of British conquest. और I'll be making इसका भी revision lecture very soon. So I hope you enjoyed the first reading session, and do like, comment, share, and subscribe to my channel. And I'll see you in the next chapter. And okay, fine. Chalo. Bye. Thank you.